Education Minister of India was just giving power with Supreme Court of the country. It is used when Supreme Court Greetings everyone. On behalf of Paathshala family, I welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 11 of our online Clat marathon series for the upcoming Clat UG 2024. But आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले before discussing today's topic, I would like to apologize you all for a mistake which was made in the last video. तो मैं आपको correct facts बता देती हूँ. The first education minister of India was Maulana Abul Kalam Azad. Okay, and I'm really sorry for that. So let's start with the topic of our day. So आज का topic है, it's a very recent and very important and a very dynamic judgment given by Supreme Court of India in the month of May, and it is that Supreme Court granted a divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage. Okay, so let's start. तो पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं. The very first is what is the meaning of irretrievable breakdown of marriage. इसका मतलब क्या है? किसी प्रोविजन लॉ या ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे इसकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन हो. But if we try to understand or take up in the layman terms, इसका मतलब ये है that under no condition a husband and wife, जिसको husband जिसको wife are able to live with each other, or I would say cohabitate with each other. मतलब there is not even a single drop of possibility left कि वो इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को बचा सके, अपने एक दूसरे के साथ रह सके और make a life out of it. They have tried everything and there is no reason that they should be together now. Apart from this, it is, first of all, it has not yet been a ground for divorce under the provision. ठीक है? Grounds for divorce are given under section 13 of Hindu Marriages Act 1955 and divorce by mutual consent is given under section 14B of Hindu Marriages Act 1955. ठीक है? तो ये म्यूचुअल कंसेंट से आपको मतलब समझ आ रहा हो कि दोनों पार्टीज ने एक साथ जाके पेटिशन फाइल किया डिवोर्स के लिए, एंड इसमें जो कोर्ट है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 6 to 18 मंथ्स का पीरियड देती है. क्यों देती है? कि पेटिशन अगर डिवोर्स की विड्रॉ करनी हो तो इसके लिए. एंड irretrievable breakdown of marriages में अगर हम देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 6 to 18 मंथ्स का पीरियड है इसको वेव ऑफ कर दिया है. ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कैसे पास किया, मतलब अंडर व्हाट पावर? अंडर आर्टिकल 142. ठीक है? Let's see कि under article, what is article 142? So basically article 142 is the justice giving power with Supreme Court of the country. It is used when Supreme Court has to decide a case, give an order or a decree based on justice, equity and good conscience, and there is no कुछ है नहीं कि वो उसको कर सके. And Supreme Court feels कि this is the right thing, this is the justice which should be given to the people.
So वो उस power के under the power given under Article 142 to the Supreme Court of the country, it has granted divorce under irretrievable breakdown of marriages to the parties in the case. Okay. So let's do a reading for Article 142. Confers sweeping power on the Supreme Court to pass such decree or make such order as is necessary for complete justice in any cause or matter. The decision to exercise the power under Article 142 Clause 1 must be based on considerations of fundamental, general and specific public policy. The fundamental general conditions of public policy refer to the fundamental rights, secularism, federalism, and other basic features of the Constitution. Specific public policy was defined by the court to mean some express preeminent prohibition on any substantive law and not stipulations and requirements for particular statutory scheme. ये डिस्क्रिशन पे देता है सुप्रीम कोर्ट, जो उसको लगता है कि जस्ट है, दिस शुड बी डन, तो ये तब वो यूज करता है. तो बेसिकली द केस जिसमें ये हुआ था दैट वाज शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री ग्रांट की थी अंडर ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. इस केस में बेसिकली दो तीन इश्यूज उठाए गए थे. आई लेट यू नो कि पहला कि व्हाट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142. कैन सुप्रीम कोर्ट गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर ऑन द ग्राउंड कि वो डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकता है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के आर्टिकल 142 के उस पे. थर्ड वाज कि how does section 13B of the Hindu Marriages Act plays out in all of this. तो ये कुछ issues थे इस केस के अंदर. अब सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग थी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the power to dissolve a marriage if it is irretrievably break down, सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि इसके पास पावर है, इट कैन, द कोर्ट कैन वेव. और उसने ये बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट द कोर्ट कैन वेव 6 to 18 मंथ्स का पीरियड एंड डायरेक्टली वो डिक्री ग्रांट कर सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा. जो ये चीजें हैं जिस बेसिस पे उसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री प्रोवाइड की है, उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कि वो 6 साल से सेपरेट होने चाहिए, वो लास्ट टाइम कब कोहैबिटेट किए थे, दोनों पार्टीज ने क्या एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, अपनी फैमिलीज ने क्या लगाए हैं, कोर्ट ने इससे पहले क्या मीडिएशन के डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के मेथड्स दिए हैं. लाइक दिस दीज थिंग्स हैव टू बी अंडरगॉन. आल्सो कोई भी डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल करके अंडर आर्टिकल 32 और 226 दिस सॉल्यूशन ऑफ मैरिज on the ground of irretrievable breakdown of marriage नहीं कर सकता है. तो ये सिर्फ कोर्ट ने बोला है. The judgment does not imply that people can rush straight to the Supreme Court for a quick divorce. The grant of divorce by Supreme Court on the ground of irretrievable breakdown of marriage is not a matter of right, rather a discretion. जो मैंने बताया, और वो सुप्रीम कोर्ट कुछ सर्कमस्टेंसेस है उस पर डिसाइड करेगा, और सर्कमस्टेंसेस भी मैंने आपको बताया जो कि उसको विद ग्रेट केयर एंड ग्रेट कॉशन. ठीक है. फिर है सुप्रीम कोर्ट आल्सो क्लैरिफाइड दैट द पार्टी कैन नॉट फाइल अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सीक रिलीफ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज डायरेक्टली फ्रॉम इट. ठीक है. ये ही मैंने आपको बात बताई. अब आप एक बार ढंग से हम देख लेते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड्स मेंशन किए हैं ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश करने के लिए. फर्स्ट, द पार्टीज लिव टुगेदर आफ्टर द मैरिज, कितना टाइम हो रही है. व्हेन द पार्टीज लास्ट कोहैबिटेट, लास्ट कब रही है. एलिगेशंस मेड बाय द पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर फैमिलीज. फिर है ऑर्डर पास्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स. फिर है अटेम्प्ट्स मेड टू सेटल डिस्प्यूट बाय कोर्ट इंटरवेंशन, मीडिएशन. Then the separation period should be above 6 years. अब कोर्ट ने एक चीज और बोली अपने जजमेंट में, that there is a time that we should shift from the fault theory
of divorce. तो अब आप पूछेंगे कि what is fault theory? Fault का मतलब क्या होता है? Fault का मतलब ये होता है किसी में कमी निकालना, ठीक है? अब इसे हम grounds of divorce में रखते हैं. Grounds of divorce में कुछ grounds है like cruelty हो गया या फिर desertion हो गया. तो if a party files a petition on the other party claiming that उनकी शादी किस वजह से टूट रही है, like for example क्या blame कर रहे हैं, desert कर दिया, ठीक है? Desert is a blame, it's a fault in the other party. तो that is fault theory. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इससे टाइम आ गया that we should take a move from it and we should decide cases on more practical basis. The majority of Indian family law subscribe to a fault-based theory of divorce. That is, divorce is granted if a spouse is able to prove that the marriage had suffered due to a fault or matrimonial offense committed by the other party, such as cruelty, desertion, adultery, conversion to another religion. The 5-judge bench led by Justice Sanjay Kaul highlighted that there is a need of the Supreme Court to move away from fault theory and accusatorial principle of divorce under Section 13(1) of HMA, that is Hindu Marriage Act, which prescribes divorce on the grounds where one of the spouses can be held guilty of certain misdeeds such as cruelty, adultery or desertion. अब जैसे उन्होंने यही बोला कि वो irretrievable breakdown based, जरूरी नहीं है कि हमेशा fault based ही divorce हो. Divorce can be of any reason, like fault based is one of the main reason, but और भी reasons हैं उसके अलावा, तो that should also be included. अब before summing up, I would like to tell you something that Law Commission report in the year 1978 and in the year 2009 ने propose किया है that irretrievable breakdown of marriage should be included as a ground for divorce. क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, it's a judgment law, it's not a provision, proper provision. And I hope the Law Commission and the members of the community are working on it, and let's see what the output of this judgment comes to be. Also, I would like to add one more thing, that New Zealand is the first country, Commonwealth country, जिसने divorce include किया था अपने provisions में for the first time. Okay. That's all for today. I hope you liked today's video. Let's catch up with you with new topic, another day, new video. Thank you so much. Have a good day.